नमस्कार टू इंडिया लर्न से है दोस्तों। ये प्लेलिस्ट उन स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो ना सिर्फ रियल लाइफ एआईएमएल सीखना चाहते हैं बट एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं एआईएमएल स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग में। तो बिफोर यू जंप इनटू पाइथन एंड मशीन लर्निंग एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट डेटा साइंस, हमें पहले समझना है व्हाई स्टैटिस्टिक्स। क्यों स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों मीन मीडियन मोड इंपॉर्टेंट है, वो हम जानेंगे इस क्लास में। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेट्स गो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये दोनों में क्या क्या कवर करने वाला है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी और मीन मीडियन मोड। हम लोग स्प्रेड और वेरिएंस को समझेंगे, कोवेरिएंस कोरिलेशंस को देखेंगे एंड कार्टोसिस स्क्यूनेस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब समझना, वो देखेंगे। तो व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट आज के डेट पे भी, मतलब इट्स नॉट वेरी न्यू। स्टैटिस्टिक्स आज के 50-60 साल इसके पहले भी बहुत यूज होता था। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपका क्लास में फॉर एग्जांपल 30 और 50 स्टूडेंट है, व्हाट इज द एवरेज एज। तो आप क्या करोगे, आप 50 स्टूडेंट्स का एज लिखोगे पेपर पे या एक्सेल पे एंड यू विल टेक एन एवरेज। आप सम करोगे और डिवाइडेड बाय 50 करोगे। ये मैथमेटिक्स का आपका प्रॉब्लम है। नाउ इफ आई गिव द सेम प्रॉब्लम बट इन ए वेरी हायर स्केल, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप पूरा स्कूल का जितने स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स है, 1500 स्टूडेंट्स है, वो सबका एवरेज एज निकालिए। तो इन दैट केस इट विल बी बिट हार्डर एंड इट विल बी मोर हार्डर if I ask the or if I try to solve the same problem for a particular state or particular area, कि हमारे ये पूरा एरिया में लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोलकाता में या कोलकाता में व्हाट इज द एवरेज ऑफ students who are at age 20 or who are between 20 to 25। तो आपका इसमें क्या जरूरी है, यहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट गैदर ही नहीं कर सकते। यू नीड टू अप्लाई a sample and population formula which is statistics does। इसमें आप आपको एक सैंपल डेटा को लेके आप पॉपुलेशन पे उसको इम्प्लाई करेंगे। तो यही है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे आप 100 लोगों का डेटा को इकट्ठा करेंगे, 100 लोगों से पूछेंगे। तो कलेक्टिंग डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसी 100 लोगों का जो फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जो भी जितना भी आपका पॉपुलेशन साइज है उस पे आप उसको डिराइव करोगे। दैट इज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट, वन इज इन्फरेंशियल और प्रोबेबिलिस्टिक पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या है, आप डेटा को गैदर करते हो और उस डेटा के ऊपर एक इंसाइट निकालते हो या उसके ऊपर एक कंक्लूजन निकालते हो। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज इफ यू आर गैदरिंग डेटा, लेट्स से हिस्ट्रिकल डेटा विथ अ सैंपल। लेट्स से आप 100, 200, 500 या फिर फ्यू थाउजेंड्स डेटा यू कलेक्टेड एंड देन उस वाले डेटा को जो स्टैटिस्टिक्स है, उसका जो इंसाइट्स है, वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करता हो अबाउट द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन साइज इज मच मच बिगर। जैसे फॉर एग्जांपल द सेम इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड लाइक 1 मिनट बैक। तो इसमें भी आप डेटा को आप सैंपल डेटा को कलेक्ट करते हो और उसको पॉपुलेशन पे आप उसको कंक्लूजन को ब्रिंग करते हो। So here we are showing a pictorial example. This is a sample, this is a population। तो सैंपल पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल पे हम लोग 100 पीपल का लेट्स से डेटा गैदर करते हैं और उसी 100 से हम लोग लेट्स से 10,000 पीपल का उसका कुछ एवरेज निकलता है, या फिर 1 लाख पीपल का उसका आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। सो सैंपल लेवल का जो मतलब डेटा गैदरिंग या जो भी है, उसमें फॉर एग्जांपल मीन को हम लोग एक्स बार बोलते हैं एंड विद दैट एक्स बार यू ट्राई टू एस्टिमेट म्यू। म्यू इज दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू। म्यू इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड दिस एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपल। सो मतलब आप एक्स बार को लेके आप एस्टिमेट करते हो म्यू क्या हो सकता है एंड वहीं से आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो एंड वी विल डू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा वेरिएबल को समझना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर
broadly two categories. One is categorical, one is numerical. Categorical, as the name suggests, it will have categories. तो मतलब इसमें कम डेटा पॉइंट रहेगा. फॉर एग्जांपल आप बॉय हो, गर्ल हो, या आपका कुछ रिव्यूज है. इन दैट केस प्रोबब्ली गुड, बैड, मीडियम, दोज आर सम काइंड ऑफ कैटेगरीज. तो कैटेगरीज में आपका कलर आ जाता है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, बहुत कैटेगरी के ऊपर है. दिस इज कॉल्ड कैटेगरिकल. Numerical is like numeric values. It can be 1, 2, 3, 0, whatever the value is. I mean, decimal values. आप उसको सबको numerical variables पे derive करते हो. Students, now that we have understand about what are the different types of variables, we'll talk about statistics. So statistics में दो बहुत key important thing है. One is descriptive statistics, the other one is predictive statistics. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग समझेंगे आज की क्लास में, एंड व्हाट इट एक्चुअली बेस्ट डिस्क्राइब्स, एंड we'll talk about couple of very important thing, like you will understand about the what is mu, mu is the population mean, what is sigma, why this mu and sigma are important, because we are going to have a very important topic, it is central tendency. इधर हम लोग मतलब क्या करते हैं, see we have already discussed, like there are two things, one is x bar, the other one is mu. Now you have collected 100 students age. Now if we calculate the mean of that age, that will become x bar. Our objective is to estimate what is the average age of a particular area. Let's say there is 1 lakh students in that particular area, which may be a particular city. We want to estimate that average age, which is mu, which we call population's mean, through x bar. That is our topic. So ये important है आपको समझने के लिए, what is the central tendency and how it is related. The point is, unless we understand about x bar, which is a central, point of a particular normal distribution, will not take an estimate on mu. Okay. And about the different variables, let us talk about descriptive statistics or predictive statistics. What are the different types of statistics? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास कुछ डेटा है एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट डेटा और दैट डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें आप डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ऐसा करके एक प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जहां पे आप डेटा से लेके आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो. लेट्स से आपके पास 2 साल 3 साल का डेटा है, वहीं से आप कुछ डेटा पॉइंट को गैदर करके आप 4th ईयर का कुछ वेदर फोरकास्ट या ये सब ऐसा बहुत सारा मतलब यूज केस हो सकता है. यू कैन predict something. So that is called predictive statistics. तो यहाँ पे हम लोग डेटा को समझेंगे, तो we'll understand about mu, we'll understand about sigma, what is x bar, ये हम लोग समझेंगे. ठीक है, and we will talk about mean, median, mode. So it's a very interesting thing. Okay, so first thing is, what is central tendency? So central tendency is a measure of location of middle of or center of a distribution. The distribution क्या है? For example, we have 100 students in our class, and we try to estimate what is the average age of a particular city having the, let's say, the school students who are in school. Okay, now we have got 100 students as a sample. We want to predict, let's say, 10,000 students are there in a particular locality or in a particular area. So इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100 स्टूडेंट्स का x बार निकालेंगे. x bar is the mean or the median of any one of the centrally fitted number, mean, median, mode, and we will try to estimate mu, which is a population mean, using this x bar. तो x bar को समझने के लिए हमें mean, median, mode को समझना है. So this sort of curve, which is here in the left hand side, here mean, median and mode both are at the same point, and that is why you can see दोनों side ये exactly same है, and that is why it is called standard normal distribution, or we call it normal distribution, or sometimes we call it Gaussian distribution. This is a standard normal distribution where mean equal to median equal to mode. And what it is says, this is a skewed curve. Sometimes we call it left skewed or right skewed. So it can be of this format or it can be of this format. ठीक है, so इसको हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करना है.
because it's a nature of data, you cannot always have a normal distribution curve. तो इसमें आपका मीन मोड मीडियन डिफरेंट पॉइंट पे आता है, ठीक है. वी नीड टू गेट दैट इन ऑर्डर टू गेट द x bar. That is what we are going to have. So what is mean median mode? We have a single slide for that. So central tendency किसलिए important है? Because we can explain data, we can simplify data, we can predict, or any that sort of thing is done through a central tendency, and it's a very important thing. So what is mean? कैलकुलेशन ऑफ मीन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स है, जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो एज का. So you gather age of 100 people, you sum it and you divide it by 100. That's how you got the arithmetic mean. So mean is always an arithmetic mean, which is calculated value. Why it is important? Because mean से भी हमारा central tendency पता होता है. Now always you will not get the mean. So in some cases you can use median, or in some cases you have to use mode. मीन और मीडियन और मोड ये किस बेसिस पे है उसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मीडियन. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, एज द नेम सजेस्ट मीडियन is a middle value, but before that we need to sort the data. Let's say we get this data 65 55, this is unsorted data. 14 इधर है, 92 इधर है, मतलब इट्स अनसॉर्टेड डेटा, रैंडम डेटा है. आप पहले इसको सॉर्ट कर लिया, स्मॉलेस्ट इन द लेफ्ट साइड एंड लार्जेस्ट इन द राइट साइड. अब सॉर्ट कर लिया एंड यू सी इट इज द मिडिल वैल्यू, बिकॉज 5 नंबर है लेफ्ट साइड में और 5 नंबर है राइट साइड में. दिस इज कॉल्ड median value. So but here again I can probably explain you. Let's say for example we get this three value, we can take average of these three also as a median. So 55 and 56 का हम लोग एवरेज लेके 55.5 भी कर सकते हैं, ठीक है. बट ओवरऑल द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, और I mean we have to take the middle value. That's what median is all about. मोड कहाँ पे इम्पोर्टेंट? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. ये एक्चुअली हिस्टोग्राम बोलते हैं. आप अगर इसको प्लॉट करते हो, यू विल सी द मोस्ट ऑकर नंबर, एंड दैट इज व्हाट वी टेक एज अ सेंट्रल वैल्यू आल्सो यूजिंग मोड टेक्निक. So let's say this is the same distribution. We take 65, 55, 89, and this is distributions. आप देखोगे 56 टू टाइम्स है, 55 थ्री टाइम्स है, तो इधर हम लोग बोलेंगे डेटा का सेंट्रल डेटा है 55, because it's a most occurred number, or it's a most occurred historical number. So anyways, mean median mode कहाँ पे important है? As we have discussed, this is a very important slide. When the data is standard normal distribution, आपके पास mean median mode तीनों एक ही जगह में है एकदम centrally, तो we will always take mean. If let's say the data is let's say skewed data, any of this sort of skewed data, ठीक है. तो डेटा में लेफ्ट साइड या राइट साइड बहुत हेवी है. इन दैट डेटा वी कॉल इट skewed डेटा. उसमें हम लोग ऑलवेज मीडियन इज अ बेस्ट पॉसिबल सेंट्रल नंबर, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन मीन वहां पे आपका गलत हो सकता है. सो लेट्स से वी कलेक्ट डिफरेंट रिव्यूज डेटा एंड वी प्लॉट देम एंड वी टेक वी हैव टू टेक द मीडियन वैल्यू. मोड कहाँ पे लेना है? अगर हम लोग नॉमिनल डेटा को यूज करते हैं. नॉमिनल डेटा वी टॉक अबाउट दिस ऑलरेडी. अनऑर्डर्ड कैटेगरिकल डेटा, इट्स अ कैटेगरिकल डेटा. मीन लेते हैं कहाँ पे? इट्स अ कंटिन्यूअस डेटा, नॉट कैटेगरिकल डेटा. कंटिन्यूअस डेटा जहाँ पे है वहीं पे हम लोग मीन को लेंगे, ठीक है. इट्स अ कंटिन्यूअस. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस, जस्ट इसको समझिए. ये कैटेगरिकल डेटा में है. ये हम लोग ऑर्डिनल डेटा पे करेंगे, विच इज अगेन अ कैटेगरिकल डेटा. ऑर्डिनल डेटा आपका कुछ केसेस में आपका नॉमिनल डेटा में वी यूज मोड, एंड ऑर्डिनल डेटा में वी यूज मीडियन. So you understand about a very important thing, which is like mean median mode and central tendency. Now we talk about empirical rule. This is again the most important thing before we jump into descriptive statistics, example Python and so on. So इसमें क्या हम लोग बोल रहे हैं? This is what we talked about, a central point of a standard normal distribution. आपका mean, mode, median सब इधर है at 0th point. Now इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it mu. Now we are putting the x bar and
putting it in the population. This is about population. Empirical rule is population example. तो इसमें क्या है, आप म्यू से, म्यू इज दिस पॉइंट, आप देखो कि बोथ साइड में -1 +1 है, -2 +2 है, -3 +3 है. तो these are the distance or deviation from the mean. तो mu ±1 sigma, this is this range. Mu ±2 sigma, which is between these two range. ठीक है. एंड म्यू ±3 सिग्मा इज दिस range. अगर आपका डेटा में से म्यू ±1 सिग्मा में, which is this part, 68% of your value lies, or if 95% of your value lies in 2 sigma, और 3 sigma में अगर आपका 99.7% value lies, तो that important, that particular curve is called standard normal distribution. So let's say you gathered data, and if your data, I mean, proves any of this logic or empirical rule logic, then we will call this distribution normal distribution. It is the most important thing. यहाँ से पता चलता है कि डेटा को लेके आप कैसे इसको ट्रीट करोगे. अगर इस डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वी ट्रीट द डेटा इन वन वे. इफ द डेटा इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें उसको नॉर्मलाइज करना है डेटा को, देन डिफरेंट टेक्निक्स कम इनटू पिक्चर. तो वो हम लोग पाइथन से करते हैं, बट बिफोर दैट दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. Okay, okay guys. So let's go ahead for the next topic, which is another theorem. So it is very important. Like standard normal empirical rule. इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन. के इज अ वैल्यू पुट लाइक दिस 1 - 1/k². तो के इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन. म्यू ±k सिग्मा में के ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1. तो शेबीज थ्योरम में क्या है, अगर आप इसमें भी आपका सेम ही आएगा, आपका 1 - 1/k² वैल्यू अगर लाई करता है बिटवीन म्यू ±k सिग्मा में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और हमें अगर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, वी नीड टू नॉर्मलाइज इट बिफोर putting any logic on the data. So before, I mean, in the descriptive statistic, we understand two very important things. One is how to calculate mean, median, mode, and what is the significance of central tendency, because we try to predict the population mean using sample mean. तो सैंपल मीन एक्स बार से हम लोग म्यू को आई मीन एस्टिमेट कर रहे हैं. तो एक्स बार और म्यू में हमें कैसा नॉर्मलाइज करना है डेटा को, वो हमें दो तरीके से कर सकते हैं. इधर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, or we see that if 68% data lies between 1 plus minus sorry mu ±1 sigma, mu ±2 sigma में अगर 95% डेटा लाई करता है, mu ±3 sigma में अगर 99.7% डेटा लाई करता है, then only will apply the rule and we will go ahead with the formula. It's a very, again, it's a very important thing. I mean, you'll come across a lot of these problems in your data science journey. What is Z? Z score is a value. Z is nothing but, I mean, that value 1, 2, or 3. This see, mu, mu -1 sigma, mu -2 sigma, mu -3 sigma. So this 1, 2, 3 are nothing but how many unit you are away from your mean. So this is a unit. This is a score or unit. How many standard deviation you are away. ठीक है. तो दिस इज आई मीन कॉल्ड सेट. लेट्स से फॉर एग्जांपल म्यू से आप 2 सिग्मा में कितना यूनिट अवे हो, 2 यूनिट अवे है, तो योर जेड विल बिकम 2. आप 3 सिग्मा केस में जेड विल बिकम 3. दैट्स इट. So it's a, I mean, thing like, you have to calculate lot of times what is z and how you want to calculate that. Just for that I put that into a slide. Now coefficient of variation. So इसमें क्या है, सीवी किसको बोलते हैं, आप सपोज सिग्मा म्यू से कितना फ्रैक्शन है, कितना दूरी में है, उसको हम लोग इससे भी डिफाइन करते हैं. दिस इज वन वे वी ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला. तो आप इसको देखते हैं कि कितना सीवी आपका डेविएशन है, यहाँ से आपको पता चलता है. तो सीवी इज जस्ट अ फॉर्मूला ऑफ सिग्मा अपन म्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करते हैं. अगर ये फॉर एग्जांपल 95%, 98% आता है, देन योर distribution is kind of a normal distribution. Then we can call. Now we have talked about mostly the mean or mean related thing, which is a central thing. Now we'll talk about variance or standard deviation. Variance क्या है? Variance ये है कि आपका mean और middle value से डेटा कितना दूरी में है, कितना कितना वेरी कर रहा है. अगर डेटा बहुत वेरी करते हैं, we call them outliers.
फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ एस्टिमेट करना चाहते हो, ठीक है, यू गैदर्ड 5 डेटा, इट्स 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट में आपका डेटा ऐसा आ रहा है 100, 105, 110, एंड लेट्स से 95, एंड द फिफ्थ डेटा इज लेट्स से 600, 605. Let's say 605. Now you see all the data which is 100, 105, 95, 110, all these numbers are kind of, I mean, the variance is small. Let's say one number comes with a very big variance, which I probably take 605, which is like 500, I mean, away. I mean, 500 vary than the other phone numbers. Now you need to understand what is the standard deviations as variance of that particular distribution. 5 नंबर अगर है, इसमें एक नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बहुत ज्यादा है 4 नंबर से, we have to treat that number. We probably need to discard that number or we replace that number. That decision is upon the scientist or data scientist. But essentially, we need to understand what is variance or standard deviation. Probably in multiple examples similar to that. तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस एक ये चीज है कि आपका डेटा में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो एग्जांपल में दिया, आप कितना दूरी में है, म्यू से कितना दूरी में आपका वैल्यू लाई करता है, ठीक है, इसको वेरिएंस को हम लोग एक स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि आपका डेटा लेट्स से 4 इज द वेरिएंस, ठीक है, वी ऑलवेज नीड टू टेक द square root of that. Square root of that. Let's say sigma is, let's say, will be square root of 4, which is 2. So आपका डेटा 2 सिग्मा में है, and then we call it a standard deviation. Sorry, standard normal distribution. So variance is important. Variance is always denoted by a square value, and standard deviation is the square root value. देखो सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ओके, स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन is, again I'll just write it for you, standard deviation is the square root of variance, ठीक है। तो आप वेरिएंस को निकालते हो एंड देन वी आर डूइंग द स्क्वायर। व्हाई इट इज लाइक दैट? देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज नॉर्मली आपका डेटा पॉइंट में अगर नेगेटिव आ जाता है तो स्क्वायर रूट में आपको, आप मतलब बहुत ही मतलब एक नंबर आ जाता है तो आप नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, इट्स अ अनडिविजिबल थिंग। तो इन दोस केसेस वेरिएंस, वी अप्लाई वेरिएंस सिग्मा को लेके हम लोग वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आईक्यूआर, इंटर क्वार्टल रेंज। ये भी एक वे है आपको डेटा का स्प्रेड और वेरिएंस निकालने के लिए। आईक्यूआर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आप क्या करते हो, डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। आपके पास डेटा है तो वी कॉल इट, दिस इज द फर्स्ट first quarter, this is the second quarter, this is the third quarter, and this is the fourth quarter. Now Q1 मिडिल में है, Q2 मिडिल में है, Q3 मिडिल में है, आपका तीन ही ये हो सकते हैं, मिडिल पॉइंट हो सकते हैं। Now all the data lies between Q3 and Q1, आप इसको डिनोट करते हो थ्रू IQR, and that is again an important metrics of your variance calculation, ठीक है। आप इस डेटा से आप क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डेटा का स्क्यूनेस पता करना है, डेटा में आउटलायर है या नहीं। हम लोग, मैं एग्जांपल दिए कि आपके पास सपोज 5 नंबर है, 1, आपका 11, एंड लेट्स से आपके पास और एक नंबर है 6, आपके पास है और एक नंबर है लेट्स से 9, एंड दिस द फिफ्थ नंबर इज लेट्स से 105। Now you see that all 4 numbers are kind of equally, I mean, distributed from the mean, but the one number is very much average. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आउटलायर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटलायर। ये आउटलायर को ट्रीट करना है, ठीक है, आउटलायर को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। दैट इज वाई वी नीड सिग्मा, वी नीड IQR, ऑल दिस टेक्निक्स। I hope I'm able to make you understand. But अगर आपका कुछ questions है, definitely you have to put that question in a chat in the, I mean, आप YouTube में इसको पूछ सकते हो, and you can directly contact us also in our, I mean, shown number in the description. But आप क्या कर सकते हो, आप ये सब को लेके आप पूरा जो आपका ये जो हम लोग डाल रहे हैं इधर, तो everything will put up as a slide format. You can take a look from this slide, everything will be there. There will be, like, it's a free of cost, you can download it, you can go and check whenever you require it.
So calculation of IQR we have already covered, and we discussed about this. What is variance? What is standard deviation? IQR. It's important. Another one is covariance and correlation. These two are very important things. And why we need covariance? Why we need correlation? तो covariance क्या है? तो सपोज आपके पास दो डेटा है, आपके पास सपोज बहुत डेटा है, एंड यू वांट टू सी, लेट्स से, हाउ टू ऑफ देम आर एक्चुअली बिहेविंग टुगेदर। तो लेट्स से आपका स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का डेटा है, दो स्टॉक है, और लेट्स से आपका नंबर्स, आपका जो फिजिक्स का नंबर है, मैथ्स का नंबर, आप देख रहे हो कि जो जो बच्चा फिजिक्स में स्ट्रांग है उसका मैथ्स, जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है उसका मैथ्स भी स्ट्रांग है। जिसका फिजिक्स में सपोज 80% मार्क्स आ रहा है, उसका मैथ्स में भी 85% आ रहा है। तो दिस टू, फिजिक्स एंड मैथ्स, दीज टू आर गुड एग्जांपल ऑफ कोवेरियंस। ठीक है। बट आपका सपोज बंगाली का मार्क्स और मैथ्स का मार्क्स, इसमें कोई कोवेरियंस नहीं है, इसे लाइक जीरो कोवेरियंस, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस, ये एक्चुअली एक्स, एक्स बार से कितना दूरी में है, वाई वाई बार से कितना दूरी में, एंड दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग वन अपॉन एन माइनस वन, एंड इसको हम लोग वन टू एन में देख रहे हैं, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को। तो व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज द टेस्ट रिलेशनशिप। मतलब ये, आई टेल यू वन एग्जांपल आपका पास, हाँ। तो देखो, आपके पास डेटा पॉइंट्स है, दीज आर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल आप आपका जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बंगाली सबका नंबर लास्ट जितना जितना मिला है, फॉर एग्जांपल 4 एग्जाम्स हुआ है, तो ऑल द एग्जाम्स नंबर यू पुट अप हियर, एंड यू वांट टू सी, लेट्स से फिजिक्स नंबर एंड मैथ्स नंबर, आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो ये इस प्लॉट में, लेट्स से दिस इज अ फिजिक्स नंबर, दिस इज अ मैथ्स नंबर, दिस इज अ फिजिक्स नंबर, दैट वे you put, you see that the values are such that, say, lot of numbers are, this number and this number are quite far, but you see overall, if you plot all of them, you see there is a correlation between physics and maths number, and there's a positive correlation. See, it's a positive number, 0.4. So in that case, we will call बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स वी हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मतलब एक नंबर जिसको आगे मिल रहा है, तो ये बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है जो फाइनेंस में है, फाइनेंस का एग्जांपल, फाइनेंस का बैकग्राउंड में है, बैंकिंग है, तो वी वांट टू सी द डेटा, हाउ इफ द टू डेटा आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नॉट। ये मशीन लर्निंग पे और डिफरेंट जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नो कोरिलेशन है, आप देखोगे पूरा नंबर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, ये सारा नंबर को प्लॉट करके देखो, आप देखो कि इसमें एक नेगेटिव कोरिलेशन आपको आ रहा है। तो मतलब इफ वन इज इंक्रीजिंग, लेट्स से आपका, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक, लेट्स से स्क्वायर फुट, ये देखो आपका फ्लैट का स्क्वायर फुट जितना आपको ज्यादा हो रहा है, आपका प्राइस भी ये हो रहा है। आपका ये एग्जांपल आप कर सकते हो कि बिटवीन प्राइस ऑफ अ फ्लैट, of a real estate, price of a real estate is positively correlated with a, let's say, with a square feet, with a square feet, आपका स्क्वायर फीट लिखो, स्क्वायर फीट से वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लाइकवाइज आपका अगर आपका अगर ह्यूमिडिटी, आपका अगर सपोज फॉर एग्जांपल विंटर में आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज। ठीक है। तो देर आर मेनी थिंग, मेनी एग्जांपल्स यू कैन टेक व्हिच आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, देर आर मेनी एग्जांपल्स व्हिच आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो इन ए नटशेल, कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है। कोरिलेशन एंड कोवेरियंस बोथ आर इंपॉर्टेंट थिंग। कोवेरियंस इज अ क्वालिटेटिव नेचर, covariance is a qualitative, and correlation is a मैथमेटिकल रिप्रेजेंट, और इट्स अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंट। आप देखोगे इसमें कितना कोरिलेशन आपको वैल्यू मिलेगा, एंड एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंटली दोनों की यूज करते हैं व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। एंड द फाइनल टॉपिक इज कर्टसिस एंड स्क्यूनेस। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू सी दैट इफ द डेटा हैव एनी सिमेट्री प्रॉब्लम, सिमेट्रिकल डेटा अगर नहीं है, तो इसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम लोग देखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा एक कर्व होता है, और इसमें इसमें आपका मीन इधर रहता है। ठीक है, मीन मीडियन मोड सब इधर रहता है। इट्स अ ऑल आर सेम एट 0 पॉइंट। नाउ इट्स अ नेगेटिव स्क्यू। तो देखो नेगेटिव साइड में स्लोप बना है, जहां पे स्लोप बना है दैट्स अ नेगेटिव, दैट्स अ टर्म वी कॉल इट। इसमें क्या है, आपका डेटा मैक्सिमम ज्यादा इधर है, तो आपका इधर मोड आएगा, बिकॉज इज अ मैक्सिमम हिस्टोग्राम वैल्यू इधर आएगा। यहाँ पे मीडियन आएगा,
यहाँ पे मीडियन आएगा आपका, एंड इधर आपका डेटा का मीन आएगा। तो whenever that's a negatively skewed curve, आपका मोड हमेशा ज्यादा होगा देन योर मीन। ठीक है, योर मीन। So that's how skewness is important to understand skewness and kurtosis. Both are important. इससे आप इसको डेटा को आपको नॉर्मलाइज लाना है बिफोर यू अप्लाई लॉजिक। तो इस डेटा में आपका ठीक ठीक ऑपोजिट होगा। इधर मोड आएगा, इधर मीडियन आएगा एंड इधर मीन आएगा। तो मीन इज योर ग्रेटर वैल्यू देन योर मोड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस कहाँ हुआ है? स्क्यूनेस पॉजिटिव साइड में हुआ है। आपका लॉन्ग टेल है राइट साइड में। ठीक है, राइट लॉन्ग टेल है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। इसको आप ऐसे करके कर सकते हो। टेल कहाँ पे, लॉन्ग टेल कहाँ पे आ रहा है, दैट इज व्हाट स्क्यूनेस इज अबाउट। इसका स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, यू कैन टेक ए लुक। दिस एवरीथिंग हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी इन द अपडेटेड और अपलोडेड इन द वेबसाइट एंड द डिस्क्रिप्शन लिंक। आप चेक करोगे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सबको मिल जाएगा। देन वी कॉल कर्टोसिस। कर्टोसिस इज लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो कर्व बन रहा है, ये क्या फ्लैट बन रहा है, प्लैटिकर्टिक बन रहा है, या नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल इज मेसोकर्टिक, और इसको बहुत शार्प हो रहा है, लेप्टोकर्टिक बन रहा है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आप अगर ये ज्यादा हो रहा है तो यू नीड टू रिमूव डेटा टू मेक इट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा आ रहा है थोड़ा फ्लैट ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा लेफ्ट राइट में हो रहा है, आपको डेटा को यहाँ से थोड़ा डेटा को रिमूव करना है टू मेक इट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन I mean, it's very, very important because you apply a machine learning technique or any technique. Before that, you have to normalize the data to apply any logic. That's all for today. Excellent work. अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो मतलब आप एआई सीखने में एक कदम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करो किसी एक के साथ, और इंडियन एनसीआई को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।